Yes, come in. Okay, we are going to learn today induction motor, and induction motor is one of the most used in the industries for last 40 decades. It's not 10 decades, it's last 40 decades. Even you are enjoying the fan, that is also induction motor. Only the difference is that this fan is single phase, whereas in industry when high power is required or heavy machine is to be rotated, the best motor is considered as induction motor. If you want any motor to be work in the Rajasthan, in the remote area, and you want to keep it running for that place and automatically operated, so the best motor is induction motor. Because it is spark free, there is no problem of sparking and other things. DC motor we will cover after this, but today only we'll discuss about induction motor, but recently we have learned about the transformer. So that's why I prefer that transformer we are giving AC supply, and that is static. Power is transformed from the primary to secondary with the help of the principle of mutual inductance. That is, a flux from the primary links the flux in the secondary conductors, and because of that the power flows from the primary to secondary, and there is a equalization of power. Magnetic motive force in the primary is N times of I1. So N1 I1 is same as the power in the secondary, or magnetic motive force in the secondary, that is N2 into I2. So in this way you can get the relation between the primary current and secondary current. Also the EMF per turn is constant whether it is in primary or it is in secondary, because the formula is E is equal to d phi by dt. Only when the number of turns is increased, only when if the number of turns is increased, then the voltage is increased or the EMF induced is increased. There are two terms. One is the supply voltage given as V. There is another term, the EMF induced in the conductor is called E. The V, when you say V is equal to L di by dt, and E is equal to N d phi by dt. Again, because an inductor or a transformer primary, if you take it as a coil, it is just an inductance. And if you are applying a voltage, so what is the formula? V is equal to L di by dt. Similarly, EMF induced in the conductor is N d phi by dt. So from that we can relate L di by dt is equal to N d phi by dt, and you can get a relation between the flux and inductance. The students, those who have gone from all the revision of the transformer, they can clearly understand what I mean to say is, wherever there is a flux, we can relate that in terms of inductance. And flux is two types. One is a leakage flux, another is a mutual flux. The voice which is uttered by me and listened by you is a mutual voice, right? I'm saying and you are listening to that. The way I'm saying now, it is only I say and I listen to that. You didn't listen to that. So that is called leakage flux. So leakage flux is the flux which is linking with me only. Your flux which is linking with you only, that is called leakage flux. When you say the sound which is coming to me, that is because of that is mutual flux. And mutual flux in a transformer remains constant because whatever the load demands, the primary has to give the same. Whatever the secondary demands, the primary has to give the same. If the primary demand is more and more and more, what will happen? Secondary demand is increased, so primary will try to give, but after a certain level the primary will give up and say, okay, sorry, I'm not able to give up anymore. So fuse will blow off or the conductor will burn up. So for that reason we need to go for what? Transformer. Transformer is which device? Static device or which device?
Static device. Why it is called static? It is called static because not a single part of the body is moving here. Only you are giving the current in the primary and you are getting the current in the secondary winding. That's all. Now the same principle is applied in a induction motor, where also there is a primary, and now this primary is called the stator, and there is a secondary which is called rotor. Now imagine this fan, which is you can see over here. Fan is there. The fan, you have got a supply is given to a static part, which is at the center, and on the periphery there is another motor which is rotating. There is no touching between the rotor and the stator. There is no contact, physical contact between the two plates, but still one is able to rotate another one. How? How is it possible that somebody can rotate another one? Let us go to the basic principle of EMF induced, and then basic principle of how the torque is produced. Let us say we have got a conductor. If this conductor is carrying a current towards you, if this conductor is carrying a current towards you, and let us imagine that the flux is there from the top to bottom. The flux is pointed downward and the current is towards you. So this conductor will experience a force. This conductor will experience a force depend on which rule? Fleming's left hand rule. So if I hold this, my left hand, 3 fingers perpendicular to each other, the magnetic field is downward. So it is downward. The current is towards you. The current is towards you. So magnetic field is downward. My thumb is pointing towards the window. My thumb is pointing towards the window. That means this pen will be forced to move in the left hand side of me. So if the current is going towards you, it will move this way. If the current is coming towards me, it will move on the right side. Clear? The point is that Fleming's left hand rule, that is also because of how the force is produced between the conductors and flux. So whenever there is a flux whenever a current carrying conductor experience a flux, this conductor will get a force. ठीक है ना बेटा? मतलब अगर इस कंडक्टर को मैं इस फाइल के अंदर रख दूंगा और कंडक्टर से अगर करंट फ्लो किया, अगर ये कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा फोर्स लेफ्ट हैंड साइड, तो ये मेरा पूरा का पूरा फाइल ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा लेफ्ट हैंड साइड. So if I will put this inside the bottle, if the conductor is experiencing a force, the bottle will also experience a force. Now what I will do, I will put this bottle on a cage. Similarly, I will not use one conductor, I will use multiple conductors in a circle. So if this conductor is experiencing a force on the left hand side, the entire body will also experience a force and it will rotate in the left hand side. So we will use 2 bottles, 2 conductors. Can I use yours? So we will use 2 conductors. One conductor, the current is going towards you. Another conductor, the current is coming towards me. So what will the upper one will get a force on the left hand side? Lower one will get a force on the right hand side. If I will place this on a coil, if I will place this on a iron bar, the iron rotating iron core, so what will happen? There is a torque like this. The upper one on the left hand side, lower one on the right hand side. So it will try to rotate in the like this. The moment it will reach at the top, the current direction should change. The current direction should change again. Then again it will get a force like this. अगर इसका करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. मतलब सिर्फ ये ऐसे टॉर्क देगा और यहां आने के बाद फिर से ऐसे घूमेगा. So the direction of the current should change once it reach at the top. This will also change. ठीक है? Okay, thank you. So same picture I will draw now here, and then we will one by one I will explain you how does it works. Now before that, can you tell me, if I want to induce a EMF, I want to induce a EMF in this wire or in this coil, what are the 2 different methods? Suppose a conductor है
मैं आपको बोला कि फ्लक्स ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, करेक्ट? ये फ्लक्स कहां से कैसे जनरेट करोगे बेटा? हाउ कैन यू जनरेट द फ्लक्स? If you keep the north pole on the top and south pole at the bottom, so the flux will come from the north and enter into the south. Perfect? Okay, if there is a constant flux, it will get a constant torque. Correct? It will get a torque like this. Okay? And how the EMF is induced? Suppose somebody will ask you, what are the two different methods of EMF induced? One is a static induced EMF, another is a rotating induced EMF. याद रखो, EMF तब इंड्यूस होता है जब कोई चीज मूवमेंट में होता है. सपोज आप रात में किसी को देखा, आप उसको पहचान नहीं पाओगे until unless he or she is not moving. Until that particular insect or something is not moving, probably you are not able to visualize that. Can you? एक कीड़ा है वहां पर आप देख नहीं सकते. क्यों? क्योंकि आप सिर्फ देख रहे हो, but it is not moving. So you will say that it may not be there. The moment it moves, you will able to see, or the moment it blinks, you can able to see. जो ब्लिंकिंग है उसको बोलते हैं स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ. वो मूव नहीं कर रहा, सिर्फ ब्लिंक कर रहा है. That it is creating a flux like this, EMF is induced. Another, he is moving like this, EMF is induced. The first one is called the static induced EMF. The second one is called rotating induced EMF, dynamic induced EMF. So EMF induced by two ways. One is a static induced EMF, one is a rotating induced EMF. ट्रांसफार्मर जो आपने पढ़ाई किया वो है स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ. वहां पर कोई चीज रोटेट नहीं कर रहा, सिर्फ करंट जा रहा है जो कि एयर एसी है. द एसी करंट क्रिएट्स अ अल्टरनेटिंग फ्लक्स लाइक दिस, and because of that EMF is induced in the secondary conductor. But in case of induction motor, the flux is there, and since the conductor is in motion, initially तो कंडक्टर मोशन में होता ही नहीं है. कोई भी फैन है, अभी ये मोशन में है क्या? The moment I will give the supply, it will start running. इसका स्विच कहां पर है? Okay, can you just go and switch, turn it on? See, till now it is not in motion. The conductor, this is not in motion. The moment he will give, so it started rotating. ऐसा क्या कर दिया इसने? ऑफ कर दिया ना, ऑन कर दिया? ऑफ है, अभी ऑफ कर दो. What he has done so that it is rotating, he just gave a AC supply. AC सप्लाई इसने कॉइल में दिया और इसके कारण ये रोटेट कर रहा है. आपको मुझे क्वेश्चन पूछना है, why? You need to ask me the question why. Because if it is getting a force, that means there is a current over here. क्योंकि अगर आप मतलब मैं अभी बोलूंगा इसको सावधान विश्राम, ये कर पाएगा? But moment I will say to her, she will immediately do. Why? अगर ये जिंदा है, मैं जिंदा हूं, मैं ऑर्डर देता हूं तो she will respond, she will order me to, I will respond. That means if there is a current in your body, you will respond. If the current is in my body, then I will respond. That means if the two conductors are there and there is a current in both the conductors, then there is a torque. याद है ना, दोनों में करंट है तब जाके टॉर्क है. जो भी लॉ हो, पर दोनों में करंट होने से ही रेस्पॉन्स होगा. अगर इक्वल करंट फ्लो कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, रिपल, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, क्लोज. ये भी आपने +2 में पढ़ा हुआ है, राइट? रीजन भी आपको मालूम है. बट इन बेसिक्स अगर दोनों कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, देन देयर इज अ फोर्स. हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसे इसने सप्लाई दिया, व्हाट्स योर नेम बेटा? Pradeep. The moment Pradeep has given the supply, the current flows in the stator. The current flows in the stator. Then how does the current flows in the rotor? Without any touch? Who can answer? The current flows in the stator. Then how come the current flows in the rotor? How? ऐसा क्या हो गया? Yes. म्यूचुअल इंडक्टेंस. अच्छा, सिर्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलने से यहां नहीं होगा.
Mutual inductance is the correct answer. Because the current flows in the conductor which is taking the AC current. मैंने आपको बताया ना, जो दोनों बोतल हैं, इन दोनों का डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज होना चाहिए और उसका सीक्वेंस वैसा ही होना चाहिए जब वो एक रोटेशन कर ले. So let us draw the picture, then we will come to the conclusion. Right? We got the circle here. The circle represents a stator upper part. This is the stator upper part. So to avoid the confusion, usually the conductors are concentrated and kept in a position RYB. So the conductors are kept here. One is R, then Y, then B. You have three conductors placed like this, R, Y, B. Their placement is equally important as it is the phase sequence. We call it phase sequence as R, Y, B. The placement is very, very important. From the center, if this position is 0 degree, from here to here, this angle must be equal to 120. And again from here to here, the angle must be equal to 120. Like that, they are placed in the inductor in space. They are placed in the inductor in space by an angle of कितना डिग्री? 120 डिग्री. ठीक है? Right? And now we will give a three-phase supply to this induction motor. We will give which supply? Three-phase supply. ठीक है? तो three-phase supply हम कैसा देंगे? We will give the three-phase supply VRN, VYN, VBN. What is the formula VRN? Vm sin omega t, VBYN, Vm sin omega t minus 120 and Vm sin omega t minus 240 degrees. We will give the supply to R phase, Y phase and B phase. In time, they are displaced from each other by an angle of 120. Is it okay? Understood? So they are displaced in time by 120, in space also by 120 in this way. Correct? So three-phase supplies that we will give here is look like this. One is R, Y, and another is B, and here we have 415 volt, three-phase, 415 volt, 50 hertz AC supply. Is it okay? Easy? This is the first part. Okay? After that, your question is that these conductors are static. We are giving AC supply. How does it able to rotate a body, which is called rotor? How it is rotating the body? The stator is not rotating. Let me draw the rotor here. This is a rotor core which is made of slots like this so that the conductors can be placed over here. And inside it there is a jockey kind of thing which is used to fix it in the shaft. Shaft भी है ना, जो shaft है उसको घुमाने के लिए जो यूज होता है. अब हम थ्री फेज सप्लाई जैसे देंगे तो रोटर में अगर करंट प्रोड्यूस होगा तब जाके ये मूव करेगा, नहीं तो ये मूव नहीं करेगा. और रोटर में करंट तब प्रोड्यूस होगा जब ये रेट किसी भी फ्लक्स को बदलते देखेगा. मतलब एक कंडक्टर में ईएमएफ तब इंड्यूस होता है. अच्छा, एक कंडक्टर में करंट कब फ्लो करेगा
जब वोल्टेज होगा, करेक्ट? बिना वोल्टेज के करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं. सो द करंट इज देयर बिकॉज ऑफ सम वोल्टेज. नाउ दिस वोल्टेज इज देयर, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड इंड्यूस वोल्टेज. ये इंड्यूस वोल्टेज है बिकॉज ऑफ सम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. बिकॉज ई का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ई? एन डी फाई बाई डी टी. यानी कि अगर देयर इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, देन देयर इज अ ईएमएफ इंड्यूस. इफ देयर इज अ ईएमएफ इंड्यूस इन द रोटर, द करंट विल फ्लो. अब ये ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब बिकॉज अगर इस करंट हम देते हैं, क्या ये एक फ्लक्स प्रोड्यूस कर सकता है जो कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट करे? ऐसा संभव है क्या? दिस इज पॉसिबल. Yes, it is possible. I will show you two instant of time. The flux is changing with the magnitude of the flux is changing with time. I will show you this with the help of a diagram. ठीक है? एक एक diagram बताऊंगा. I will change the screen. I will show you diagram and you will understand. For that, I will just switch the screen to another one just to tell you one more thing. Let us say you have got only R phase over here, like this, and this is called R and this is called R dash. And the current over here, let us say this is in is given as cross and coming out is given as dot. अंदर की तरफ जा रहा है तो क्रॉस, बाहर की तरफ आ रहा है तो डॉट. राइट हैंड थंब हमारा क्या रूल बताता है? राइट हैंड थंब. सो इफ द करंट इज गोइंग इन, द फ्लक्स विल बी रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन. Correct? No two lines of force can intersect each other. Diagram के हिसाब से ये इंटरेस्ट हो रहा है, but try say remember that no two lines of force can intersect each other. So it will create a flux like this. Now because of the dot, it will also create a flux बाहर की तरफ. So कैसा flux होगा? And इसका कैसे flux होगा? So what you are observing here? There is a virtual north pole at this end. There is a virtual north pole here and virtual south pole here. Agreed? This is one picture, right? Let me keep it here. Let me take it another one, yellow. This is Y and this is here. So Y is also, let me draw the Y in a different way. First we have a cross, then we have a dot. ठीक है? This is Y, this is Y dash. Again dot. Sorry, first we have a cross, then we have a dot. Current is entering from here, current is coming out from here. Fine? So how the flux will produce here? Like this. How the flux will produce here? Is it going to make a virtual magnet? Yes. This magnet is north pole is here and the south pole is. Agreed? Correct? Okay. We are talking about AC supply, not DC supply. If AC supply, the moment there is a cross and dot, just after half the cycle, this is dot and this is cross. क्योंकि एक एसी सप्लाई में पहले प्लस होता है फिर रिवर्स हो जाता है. तो पहले अगर क्रॉस एंड डॉट है तो 10 मिली सेकेंड्स के बाद क्या हो जाएगा? डॉट एंड क्रॉस. सो यू विल गेट अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड इट विल स्वैप. इट इज जस्ट लाइक चेंजिंग ऑफ पोलैरिटीज लाइक दिस. व्हाट इज हैपनिंग हियर? चेंजिंग द पोलैरिटी लाइक दिस. हियर इट इज इन दिस वे. ओके? I will draw another picture. This is over here, right? So third picture, I think you probably right now you know about it. And you will, okay, RYB. So the first is cross, then is dot. So how the flux will produce over here?
and here. Correct? So you are creating a north pole again this side and south pole over here. Agreed? That point to tell you all these three things is that if you just give R phase and Y and B are not with you, you are just going to give a north pole and which is oscillating like this. अगर इस तरह से कोई oscillate करेगा, वो आपको कंडक्टर को फोर्स दे नहीं पाएगा. He will not try. It cannot rotate the body. You cannot get a rotating flux. Rotating flux का मतलब है यहां पर अभी नॉर्थ पोल कहां पर है? Where is the north pole here? This side. Where is the north pole here? This side. Where is north pole here? This side. See, the north pole is here. If I will give R phase, after that I will go for Y phase. थोड़ी देर के बाद Y phase दूंगा, तो north pole is changing from 0 degree to 120 degree. After that, if I will give B, then again 120. फिर अगर मैं R देता हूं यहां पर, फिर Y, फिर B, फिर R, फिर Y, फिर B, तो क्या हो रहा है नॉर्थ पोल? नॉर्थ पोल इज चेंजिंग इट्स पोजीशन इन टाइम. Because of the phase sequence RYB, the north pole is changing its position from 0 to 120, 120 to 240, 240 to 0. मैं एकदम मतलब together it is like have you gone to the like Baliyatra or any place festivals? What is happening in festival? Like you will see the bulb is light is running in the like this. Light is rotating. Is such light rotates? The bulb is glowing in time sequence. Bulb time sequence में जब glow करता है तो हमको लगता है कि light is rotating. So it is not exactly rotating. So how to explain all those things in the copy? Technical language. You will say if we draw the waveform of R phase and how to draw three phase waveform. R phase बनाया, फिर उसमें दो you can put a line like this equally divided. Y phase is lagging by R phase by how much degree? 120. So let me say this is a snake whose head is here 0 degree में, ठीक है ना बेटा? And this is VR. Vy कहां से स्टार्ट होगा? 120 डिग्री से. 180 डिग्री को आप तीन भाग में डिवाइड किए, 60, 120, 180. और कहां से स्टार्ट करना है Y फेज को? 120 में. So you start from here, correct? And count 1, 2, 3, 1, 2, 3. So it will reach here. Then 1, 2, 3. It will go here. Then 1, 2, 3. It will reach here. Similarly, on the back side, you can also count here 1, 2. So 1, 2, 3. It will correct. Similarly, this is for V. Y. What is VB? The B phase is lagging the R phase by how much degrees? 240 degrees. So this is 120, this is 180, and this is 240. So it will start from where? 240. It will start from 240, then 1, 2, 3, then you join this. Then 1, 2, 3, you join this. Here also 1, 2, 3, you join this. Again 1, 2, 3, you join this. 3 phases done. Not nicely, but you can draw like this. What is the point of telling you this one? At the time instant t equals to 0, this is t equals to 0, the position of R phase, the voltage is 0. R phase तब क्या है? 0 में है. Y phase कितने में है? What is the Y condition of Y phase? Negative. What is the condition of B phase? Positive. ठीक है, हम इन तीनों को एक समय में ड्रॉ करेंगे. अब तक मैं सिर्फ आपको R phase, Y phase और B phase दिखाया अलग अलग. अब मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ तीनों को दिखाऊंगा एट टाइम t इक्वल्स टू 0 एंड ऑल्सो एट टाइम t इक्वल्स टू t1. अगर t इक्वल्स टू 0 में नॉर्थ पोल का पोजीशन जहां पर है, t1 के टाइम में नॉर्थ पोल का पोजीशन अगर बदलता है, दैट मींस इट इज ट्राइंग टू रोटेट द फ्लक्स. ठीक है ना? हमने अलग अलग देखा.
देखा कि अलग अलग में अलग अलग है, बट रोटेट कैसे कर रहा है नहीं मालूम. 3 फेज सप्लाई हम ऐसे देते हैं, टाइम t equals to 0, where is the north pole? At time t equals to t1, where is the north pole? Let us see that. Clear? So for that, let us go to the another screen again. Now, where is this? Let me draw the R phase. Let me draw Y phase, and then B phase. Clear? So R phase is positive or negative at time t equals to 0? Tell me. At time t equals to 0, R phase is 0. So neither dot, neither cross, nothing. The positive means, if there is a positive means, what is that? First is cross, then is dot. So that is the meaning of plus. We can assume somebody says, sir, पहले मैं dot करूंगा फिर cross चलेगा, कुछ नहीं problem है. Only the rotation उसका उल्टा हो जाएगा. At time t equals to 0, what is the value of Vy? Negative. Where is Vy? This is Vy. This is Y and this is Y dash. This is R, this is R dash. Negative. Negative means पहले क्या देंगे? Dot. फिर क्या देंगे? Cross. Negative but पूरा negative नहीं, कम negative है, तो छोटा. Like that. What is the value of B phase? Positive. Where is B? R, Y and this is B. B is what? Positive. Positive means first is cross, then is dead dot. Now let us draw the thumb from using a thumb rule, flux direction based on all the conductors current. Now if we draw the conductors current here, how does it look like? This is a dot, so dot is coming out. So the current is, agreed? So flux is like this. This is the direction of the flux. The direction of the flux is like this. And this side is cross. So direction of the flux is perfect. So from this, what is your observation? Where is the north pole now? North pole is here and south pole is here. This is at position t equals to t0. Fine. Let me just zoom it up and keep it aside. Okay, keep it at the corner. Now again, let me draw the same figure with R phase here, Y phase and B phase. Let me write down R, R dash, Y, Y dash and B, B dash. Now tell me, at time t equals to t1, what is the value of R? Is it positive, negative or 0? R is positive. So if it is positive, so first is cross, then dot. What is about Y? Negative. Y is negative. Where is Y? Y is negative means first is small dot and small cross. What is B? Negative. B is negative means first is small dot, then cross. Agreed? Now in this position, if I will draw the lines of force, this flux, how it will be? Is it okay? And in the cross, is it okay? So where is the north pole now? So what happened in time t1, the north pole at this place, right? Let us say this is at 0 degree. What happened at 90 degree? What happened after 90 degrees? Where is the north pole? The north pole is from this line, it is 90 degree. So wherever the north pole is at 0 degree, it will rotate in the anti-clockwise and go to the 90 degree. So यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री है
तो वो भी फ्लक्स 90 डिग्री है। यहां पर अगर 180 तो वहां पर भी 180, मतलब नॉर्थ पोल कहां पर हो जाएगा, यहां पर, फिर 270 में यहां पर, फिर 360 में यहां पर। मुझे बताओ एक साइकिल के लिए कितना टाइम लगता है? व्हाट इज द टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम हियर टू, वन साइकिल के लिए टाइम टेकन कितना लगता है, बताओ बेटा। फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज। 1/f इज हाउ मच? 1/50 इज हाउ मच? 0.02, यानी 20 मिली सेकेंड्स। एक साइकिल के लिए 20 मिली सेकेंड लगता है, करेक्ट? यानी 20 मिली सेकेंड में ये एक रोटेशन करता है, करेक्ट? अब मुझे क्वेश्चन बताओ, अगर 20 मिली सेकेंड में एक रोटेशन करता है तो एक सेकेंड में कितना रोटेशन कर सकता है? 20 मिली सेकेंड में उसको एक रोटेशन करने का टाइम लगता है, राइट? एक सेकेंड में कितना रोटेशन कर सकता है? 20 मिली सेकेंड में एक रोटेशन, एक सेकेंड में कितना रोटेशन? कितना? 20 मिली सेकेंड में 20 milliseconds for one revolution. In 1 second, how many revolutions? This 50. अरे मैं तभी से बोल रहा हूं 50। तो एक सेकंड में कितनी बार घूमा? 50। एक मिनट में, एक सेकंड में 50, एक मिनट में 3000। So this is called 50 revolutions कितना? Per second. We call it 50 revolution per second. That is called speed of the motor. Speed, ठीक है ना? इसको बोलते हैं स्पीड। कौन सा स्पीड? सिंक्रोनस स्पीड। आपका रोटर अभी तक घूमा नहीं है, मैंने सिर्फ आपको 3 फेज सप्लाई दिया है। 3 फेज सप्लाई देने से फ्लक्स रोटेट करता है, और ये फ्लक्स का स्पीड क्या है बेटा? 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। इसको बोलते हैं एनएस। वी कॉल इट स्मॉल ns इज रिवोल्यूशन पर सेकेंड। और एक मिनट में कितना रिवोल्यूशन बेटा? क्या उसको बोलते हैं कैपिटल ns। एक मिनट में तो 60 इंटू ns, सो यू कैन राइट डाउन दिस, इन 1 मिनट इट इज मेकिंग 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट। 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट, बराबर। अब तक आपने क्या समझा कि अगर हमने 3 फेज सप्लाई देते हैं तो फ्लक्स, एक रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होता है जो कि स्पेस में रोटेट करता है, जिसका स्पीड 50 रिवोल्यूशन पर सेकंड है या फिर 3000 रिवोल्यूशन पर मिनट है। अच्छा, आपने जो नॉर्थ एंड साउथ पोल क्रिएट किया, एक ही पोल क्रिएट किया ना, मल्टीपल पोल क्रिएट किया? एक पोल क्रिएट किया। ऐसी तरह अगर हम इस कंडक्टर का जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स और उसका जो वैल्यू है उसको अगर हम बदल देते हैं तो हम एक पोल की जगह 2 पोल भी क्रिएट सकते हैं। सो इसको बोलते हैं 2 पोल मशीन। व्हाट डू वी कॉल इट? 2 पोल मशीन। वी कैन ऑल्सो मेक इट 4 पोल मशीन, क्योंकि 3 पोल नहीं होता। या तो नॉर्थ एंड साउथ हुआ, फिर दूसरा नॉर्थ एंड साउथ होने से कितना हो जाएगा? अदर। सो वी कैन हैव 4 पोल मशीन और 2 पोल मशीन, राइट? सो पोल को बोलते हैं, नंबर ऑफ पोल्स इज गिवन एज P. We call it capital P. So it can be 2, it can be 4, it can be 6, it can be 8, it can be 12. जो नाल्को में यूज होता है वहां पर नंबर ऑफ पोल्स 2, 3000 RPM। और जो रेंगाली में यूज होता है वहां पर नंबर ऑफ पोल्स 6 या 8 या 12। जिससे से नंबर ऑफ पोल्स बढ़ेंगे आपका जो स्पीड है वो कमेगा।
क्योंकि अगर मैं थर्मल पावर प्लांट में जाता हूं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर, आप लोग अगर थर्मल पावर प्लांट में जॉब मिलेगा तो वहां पर बॉयलर होगा, कोयला जलाकर स्टीम इंजन से, स्टीम से आप बॉयलर को रोटेट कराओगे, ठीक है ना। उसका जो स्पीड है, आपका काम है स्पीड को मेंटेन करना, कितना, 3000 आरपीएम, क्योंकि स्टीम से आप बहुत जल्दी रोटेट करवा सकते हो। सो यू हैव टू गिव द इग्निशन इन सच ए वे द स्पीड विल बी 3000, नॉट अबव 3000। बट रेंगाली में जो है वहां पर वो जो हेड क्रिएट करते हैं, वाटर जो नीचे गिरता है और टरबाइन जो घूमता है, उनको 3000 आरपीएम डिफिकल्ट है। जब मैं नंबर ऑफ फोल्ड 4 कर देता हूं तो 3000 से 1500 आरपीएम, 1500 आरपीएम भी रेंगाली में बहुत डिफिकल्ट है। 4 की जगह मैं अगर उसको 8 करता हूं तो 1500 की जगह 750 आरपीएम। सो लाइक दैट वी कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ द रोटेशन and generate the same frequency of the current or vice versa by increasing the number of poles. तो अब तक आपने देखा कि हम जब 3 फेज सप्लाई दिए, एक रोटेटिंग फ्लक्स क्रिएट हुआ। कौन सा फ्लक्स? विच फ्लक्स? रोटेटिंग फ्लक्स। ये फ्लक्स, जस्ट इमेजिन अ ट्रेन पासिंग बाय फ्रॉम यू। सपोज आप प्लेटफॉर्म में खड़े हो, ट्रेन खड़ा है, तो आपको कुछ होगा, कुछ इफेक्ट? कुछ नहीं होगा। फिर ट्रेन दौड़ने लगा। कभी ट्रेन के पास एक डॉग देखे, कुत्ता, वो क्या करता है, जब ट्रेन स्टैटिक होता है वो भी स्टैटिक होता है, जब ट्रेन भागने लगता है या बस भागने लगता है, कुत्ता भी दौड़ने लगता है, राइट? इमेजिन दैट दिस कुत्ता इज वेरी फेथफुल टू हिज ड्राइवर, ट्रेन ड्राइवर, तो क्या करेगा वो? एंड दिस कुत्ता इज ऑल्सो, डॉग इज ऑल्सो वेरी मच एफिशिएंट, उसका स्पीड 1500 से भी तेज दौड़ सकता है। तो जैसे ही ट्रेन दौड़ने लगा तो dog is also start running in the same direction. Why? Because the dog is now induced. The dog is now induced. वही चीज यहां पर होता है। When we give a 3-phase supply, it creates a rotating flux phi, and because of the rotating flux phi, EMF is induced in the rotor. We call it ER because of the rotating flux. ये फ्लक्स ट्रांसफर वाला फ्लक्स नहीं है, ट्रांसफार्मर में स्टैटिक फ्लक्स, यहां पर फ्लक्स इज चेंजिंग। तो जो कंडक्टर यहां पर जो खड़ा हुआ है, उसको लगता है कि फ्लक्स इज चेंजिंग एट व्हाट स्पीड? d∅/dt। तो इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो डॉग क्या करता है? उसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो डॉग क्या करेगा उसके बाद? जिस डायरेक्शन में ट्रेन दौड़ रहा है उस डायरेक्शन में ही विल रन। After some time, the dog speed and the train speed is equal. तो डॉग बोलेगा ट्रेन तो रुका हुआ है, मैं भी था रुक जाता हूं। पर जैसे ही थोड़ा रुकेगा फिर ट्रेन आगे चल जाएगा, फिर डॉग दौड़ेगा। इस तरह से इंडक्शन मोटर का जो रोटर पार्ट है वो दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, एंड इट विल ट्राई टू चेज। तो जैसे ही he has given, or your friend has given the supply, there is a supply is given. सप्लाई देने से क्या होता है? रोटेटिंग फ्लक्स। The moment it is a rotating flux, the rotor start rotating. रोटर भी दौड़ने लगा। बात समझ में आया बेटा? घुसा? वेरी गुड, अंडरस्टूड। उधर लास्ट में जो रिकॉर्ड लिख रहा था, समझ में आया बेटा? समझा सकता है? Okay, anyways, yes, doubt. Magnetic field is there, but this field, north and south pole, itself rotating at a speed of, you imagine the magnet is there, but magnet itself is rotating at the speed of 1500 RPM or 3000 RPM. Once more. So eta root magnet. So eta magnetic या विद्युत करंट पास कर रहा है, eta root इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। Correct. Your friend has asked a correct question. Sir, ट्रेन के कारण रोटर डॉग में इफेक्ट आया, करेक्ट? जब डॉग दौड़ रहा है ट्रेन में भी इफेक्ट होना चाहिए ना? नहीं,
अरे डॉग इज रनिंग, तो उसका मालिक को थोड़ा सा दया आएगा ना? नहीं दया आएगा तो क्या करेगा? वो ट्रेन का स्पीड थोड़ा सा कम करेगा। पर यहां तो मालिक है करंट, और ऑर्डर कौन दे रहा है? हम इंसान। तो ट्रेन कभी भी 1500 से नीचे नहीं जाएगा, इट विल रन एट 1500। बिकॉज ऑफ द डॉग इफेक्ट, द ट्रेन हैज टू गिव मोर एनर्जी टू रन एट 1500 इफेक्ट। दैट इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। इसको बोलते हैं रिएक्शंस। वो डीसी मशीन में पढ़ाया जाता है। इन इंडक्शन मशीन्स फॉर अ मैकेनिकल स्टूडेंट्स वी लिमिटेड अप टू दिस मच। सो डिड यू अंडरस्टैंड दैट? So why the EMF is induced in the rotor, how it is induced, this is okay. So this is one kind of theoretical questions. You have to, if somebody is asking you, draw the principle of, write down the principal operation of induction motor, how does it work, you have to explain how the EMF is induced, then you have to explain with the diagram. Okay? This is a theoretical question, usually question number 8, where you have got 555 short notes type of question. So this is very easy to fetch. Only you have to draw the diagram properly at time t equals to 0, at time t equals to t1, so that the flux is rotating. And because of the rate of change of flux, EMF is induced. Is it done? Shall we stop here? Huh. Shall I take the attendance? What's the date today? 14. Happy Children's Day to everyone. I think today we have got less absentees. Okay, anyways, let us check. Roll number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 24, 26, 27, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 47, 49, 50, 51, 52, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,